Dear all, in today's session we'll be studying the adjacency matrix and then we'll be approaching towards the adjacency list. So these are the two common and the most popular approaches to represent the graph. And before that, understanding the adjacency matrix, we'll be studying the sparse and dense graph. This is adjacency matrix, adjacency list, and before that we'll be studying the adjacency graph. So let's start. So sparse graph. So what is sparse graph? We need to know in terms because that is very important. So sparse graph and dense graph, you can understand from their name. That is dense. Dense graph, that means which will have a density of edges. That is dense graph, and which will have a lesser, fewer number of edges. That is sparse graph. So sparse graph is that graph that is having the fewer number of edges. मतलब कोई भी ग्राफ अगर उसके पास edges number कम होगा, then it should be जो इसके पास होना चाहिए, then we call sparse graph. So normal, if you just observe this portion of the graph, just notice this section, ABC. How many edges there are possible? There are actually possible 1, 2, 3. So there are 3 edges. Now notice this one, A, B, C, and that is D. So if you just notice how many edges possible in here, their possible edges are 1, 2, 3, 4, and we can also draw edges like this. So these are all the possible edges that are possible here. इतने सारे edges possible है. So this is, if we just got that the number of edges here is 6. So if there is already all the edges, so we can call it that this is a dense graph. That is the dense graph. But from here, if the graph was like this, A, B, C, D, और इसमें सिर्फ कुछ ही नोड्स, these are all the nodes, और इनमें से कुछ ही नोड्स कनेक्टेड होते like this, then we would call this sparse graph. मतलब sparse graph वो ग्राफ को बोला जाता है जिसमें जितने नंबर ऑफ एजेस होना चाहिए उससे कम एजेस होता है, then we call it sparse graph. So normal graph में we just encounter big of v square of edges. इतने नंबर ऑफ एजेस पॉसिबल होते हैं नॉर्मल ग्राफ्स में, बट स्पर्स ग्राफ में एजेस डिक्रीज होकर, दिस एजेस डिक्रीजेस, और वो डिक्रीज होकर होता है ओनली बिग ऑफ वी. मतलब इतने कम नंबर ऑफ एजेस होता है इन स्पर्स ग्राफ. डेंस ग्राफ वो ग्राफ होते हैं जहां में सारे जो भी हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं. दिस इज कनेक्टेड, दैट इज कनेक्टेड, दैट इज कनेक्टेड, इफ दैट इज पॉसिबल दे आर कनेक्टेड फ्रॉम अनदर साइड ऑल्सो. मतलब जो भी है एक दूसरे के साथ मैक्सिमम पॉसिबल वे में कनेक्टेड होते हैं. दैट इज कॉल्ड डेंस ग्राफ. सो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एजेस होता है दैट इज बिग ऑफ वी स्क्वायर. दैट इज द स्पर्स एंड डेंस ग्राफ representation. And the space complexity of both of them is big of v plus e. स्पर्स ग्राफ और डेंस ग्राफ दोनों का जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी होता है दैट इज बिग ऑफ v plus e. दिस इज स्पेस कम्प्लेक्सिटी. Space complexity, that means the number of required spaces, that is also big of v plus e. Now one more thing is important कि जब भी हमें स्पर्स ग्राफ को रिप्रेजेंट करना हो, व्हाट वी यूज द एडजेसेंसी लिस्ट. क्यों? क्योंकि एडजेसेंसी लिस्ट में वी एक्चुअली रिक्वायर लेसर अमाउंट ऑफ मेमोरी. दैट्स व्हाई वी यूज द स्पर्स ग्राफ. So for representing the sparse graph, we actually use adjacency list. And for representing the dense graph, हम mainly use करते हैं adjacency matrix. For representing this dense graph, we utilize adjacency matrix. So आज की सेशन में हम mainly matrix पे focus करेंगे. Our main focus will be on this matrix. We'll be understanding this matrix. That is our main focus. So let's move towards it. Adjacency matrix. So first हम जानेंगे adjacency matrix बोलते किसे हैं. Adjacency matrix बोला जाता है जो कंसिस्ट होते हैं n क्रॉस n नंबर ऑफ नोड्स को लेकर, n नंबर ऑफ नोड्स को लेकर जो मैट्रिक्स बनते हैं दैट इज कॉल्ड adjacency matrix. दैट इज n नंबर ऑफ नोड्स, दैट इज n क्रॉस n नोड्स की वजह से जो n क्रॉस n मैट्रिक्स फॉर्म होगा दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द adjacency matrix. व्हाई दिस इज adjacency matrix? क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है दिस रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप विद द एडजेसेंट नोड्स. सपोज वी मेक अ matrix of for this point, so we will just encounter the relationship between these two vertices. It will represent, मतलब a की जो पास में है, जो adjacent में है, that is j. a और j के अंदर क्या relationship है वो represent करते हैं इस मैट्रिक्स में. That's why we call it adjacency matrix. So now look, a and j, you can observe that a और j के अंदर एक straight line है. जब भी हम straight line that is edges encounter करेंगे
we will tell it 1. मतलब अगर ages है we call it 1. Now if we just notice the relationship between A and E, the relationship between A and E, notice here A और E के अंदर कोई स्ट्रेट लाइन दैट इज कोई एजेस नहीं है, दैट मीन्स दिस इज एम्प्टी. तो जब भी हम एनकाउंटर करेंगे एम्प्टी एजेस लाइक दिस, एम्प्टी एजेस, एम्प्टी एजेस लाइक ए ई, we will put it 0. और अगर हम straight line that is ages encounter करें then we will be putting it as 1. So aj that is equals to 1. So from here we can conclude that adjacency matrix एक ऐसी मैट्रिक्स है जिससे हम 0 और 1 से फॉर्म करते हैं. that means adjacency matrix का बॉडी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है 0 0 1 0 that type of. यहाँ पे 1 है मतलब there is a age, 1 है मतलब existence of a age. पॉइंट्स के अंदर let's say a b and again this is a b. that means a और b के अंदर that is there is a connection. a और b के अंदर एक कनेक्शन, उन दोनों में एज है. अगर उन दोनों में एज हो so this is that will also become 1. that means दोनों के अंदर कनेक्शन है because they are the same points. so that is adjacency matrix. And 0 represent करता है that there is no any connection, no edges between the points, कोई एजेस नहीं है. now let's move toward the next. Now we will be understanding the entire matrix for this graph. आप जो ग्राफ लेफ्ट साइड में नोटिस कर सकते हैं, इसके लिए हम पूरी ग्राफ को समझेंगे एंड देन वी विल अंडरस्टैंड, वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग द कोड. कोड की तरफ हम मूव करेंगे. सो नोटिस दिस इज 0 1 2 3. So as you can see we will be starting for this one 0 and that is 0. So 0 to 0 can you see any age? 0 और 0 to 0 के अंदर क्या कोई एज है? नो, कोई एजेस नहीं है. दैट इज जस्ट अ सेल्फ लूप एंड द सेल्फ लूप इज कॉल्ड 0. सो विल बी कॉलिंग इट 0. सिमिलरली 1 और 1 के बीच में कोई एज नहीं है. 2 के बीच में भी कोई एज नहीं है. 3 के बीच में भी कोई एज नहीं है. दिस इज जस्ट अ सेल्फ लूप, कोई एजेस है नहीं. ओके. नाउ 0 टू 1, इफ यू नोटिस 0 टू 1 के अंदर एजेस है. 0 to 2 के अंदर भी एजेस है, दैट इज यू कैन नोटिस हियर. सो विल बी पुटिंग 1 1. नाउ इफ यू नोटिस 0 to 3, 0 and 3 के अंदर देयर इज नो एजेस बिटवीन देम. सो विल बी कॉलिंग इट 0. Now for 1, if you notice from here that if for 1, just notice 1. 1 से 0 के बीच एजेस है, yes, there is a age. So 1 to 0 will be 1. 1 to 2, is there any ages? 1 and 2, there is no ages. You can see there is no ages between 1 and 2. So it will like can become 0. 1 and 3, yes, there is ages. So it will become 1. Now the second portion, that is 2 to 3. Is there any age between 2 to 3? Yes. 2 से 3 के बीच में age है, so that will be 1. Now we can just copy the same things here. The same thing like this. 1 and there will also be 1 because this is 2 to 3. If that is 1, then 3 to 2 will also be 1. 2 to 3 1, then 3 to 2 will be 1. 1 to 3 is 1, then this will be 1. This is the property of matrix that जो भी मतलब circle में होते हैं, we can put it like this. So this is 0 0 0 and 1. Okay, so our adjacency matrix is ready and now we can clear this. So this is the main funda that how we can represent adjacency matrix. That is अगर edges हुआ we will call it 1 and अगर edges नहीं हुआ we call it 0. So हम जब भी ग्राफ में इस adjacency matrix को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, what we have to do, पहले हमें ग्राफ क्रिएट करना पड़ेगा. द ग्राफ, आप जो इस ग्राफ को देख सकते हैं, दिस ग्राफ, वी हैव टू क्रिएट दिस ग्राफ फर्स्ट. पहले हमें इस ग्राफ को क्रिएट करना पड़ेगा और ग्राफ को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी एक्चुअली क्रिएट अ ग्राफ क्लास. सो वी विल बी क्रिएटिंग अ ग्राफ फाइल नेम लाइक दिस, ग्राफ डॉट जावा. ग्राफ डॉट जावा क्लास क्रिएट करने के बाद वी हैव टू ऐड द ऑल द एजेस, सारे एजेस को ऐड करना पड़ेगा. 0 से 1, 0 and 1. फर्स्ट वी हैव टू डिक्लेयर द पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स से डिक्लेयर करने पड़ेंगे जब कितने पॉइंट्स है. देन उसके अंदर हम 1 by 1 सारे एजेस को ऐड करेंगे. विल बी एडिंग दिस एज, विल बी एडिंग दिस एज, विल बी एडिंग दिस एज, विल बी एडिंग दिस एज. 1 by 1 सारे एजेस को ऐड करना पड़ेगा.
So let's start. हम start करते हैं ग्राफ को create करना. So first our class name will be like this. From here we're starting. So first हमें class create करना पड़ेगा and that will be like this. Public class Java. Public class graph. Public class graph. Once we have created the class, उसके बाद हमें declare करना पड़ेगा the global variables that we are gonna use. So what are the global variables we are gonna use? If you are this matrix, the matrix आप देख सकते हो 2x2 की, that means 2 dimension की. We have to create that one as array, and then we have to declare the number of nodes. So let's say declare private integer, क्योंकि हम जो भी स्टर करेंगे वो जो डेटा टाइप होगा वो इंटीजर टाइप का होगा. एंड this represent 1D array, this array, and that represent the second D array, this array. So these are the representation of this one. Okay, and now the matrix name adjacency matrix. ये जो भी matrix है उसको हम नाम बोलते हैं adjacency matrix because that is the trend, adjacency matrix. And now we'll be passing कितने vertices यहाँ पर है. You can count it 1 2 3 4. So at total यहाँ पर 4 vertices हैं. So we have to declare a variable for those also. Private integer number of vertices. So now हमने declare कर लिया normally. Now we have to initialize also. So for initializing हम क्या करते हैं, constructor create करते हैं. So we'll be creating the constructor. So simply public graph, and inside this graph हम pass करेंगे number of vertices, integer number of vertices. And now we will be initializing the number of vertices. This dot number of vertices, that is equals to number of vertices. So जो भी था vertices में हम जो भी number pass करेंगे उसके साथ initialize हो गया. Now we have to initialize the matrix also for all the number of vertices. So simply adjoint of matrix, and we'll be initializing that by using the new that creates a memory, new integer n of, we call it number of vertices, number of vertices. Okay, so हमने graph को create कर दिया, that you can see from here that we have created the graph. And after this we'll be closing the constructor, and then we'll be closing the file. So this is how we can create a graph class. And once we have created the graph class, now our sole priority is to add the edges. Now our main duty is to add the edges. So now observe, these are the edge. So हमें उन सारे edges को one by one add करना है. And for that what we can do, उसके लिए हमें simply एक function create करना पड़ेगा. So we'll be creating a function named add edge जो सिर्फ edges को add करेगा. So can you notice here, जब भी when there is a edge, जब भी हम edges है, edges की existence है, what we do, हम उसको उस वैल्यू को 1 कर देते हैं. एंड कौन सा पोजीशन में, अगर सपोज हम 0 और 1 के अंदर एजेस क्रिएट करना चाहते हैं, देन नोटिस हियर 0 एंड 1 दोनों के अंदर जो है दिस इज 1, मतलब हम उन दोनों के अंदर की जो वर्टिसेस है उससे अगर 1 सेट कर दे देन एजेस इज क्रिएटेड. नाउ नोटिस 1 एंड 0, दिस इज आल्सो 1. मतलब अगर हम 2.0 और 1 इनके लिए एजेस क्रिएट करना चाहते हैं, देन वी हैव टू डू इट 0 1 एंड 1 0 दोनों पोजीशंस के लिए वी हैव टू मेक इट 1. जो भी मैट्रिक्स की लोकेशन होगा उससे अगर 1 सेट कर दे देन दैट मींस दैट इज अ मैट्रिक्स. सो विल बी सिंपली डूइंग दैट वन. Okay, so now let's start the next question. Adjacency matrix. Till now we have created the graph. हमने graph create कर लिया and this was the creation of graph.
एंड दैट वाज द क्रिएशन ऑफ द ग्राफ कि हमने पहले ग्राफ क्रिएट कर लिया एंड इसके बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट द एजेस. यू कैन सी दैट हमने ये वाला ग्राफ क्रिएट कर लिया. we'll be creating the entire graph at the later section and this is the creation of graph that पहले हम इस लोकेशन पे डिक्लेरेशन करते हैं, जो भी वर्टिसेस होते हैं हम पहले डिक्लेरेशन करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है डिक्लेरेशन. ग्लोबली डिक्लेरेशन बोलते हैं इसको. वंस यू हैव मेड द ग्लोबल डिक्लेरेशन उसके बाद हम क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन. हियर वी जस्ट इनिशियलाइज देम, इनिशियलाइजेशन. एंड नाउ द सेकंड टास्क, once you have created the vertex उसके बाद हमें क्या करना है, एजेस को ऐड करना है. द एजेस दैट यू कैन ऑब्जर्व हियर, इन सारे एजेस को ऐड करना है. उनके लिए क्या करना है, जो भी इनके अंदर की लोकेशंस होगा लाइक दिस इज 2 and 3. सो 2 and 3 के अंदर अगर हमें एजेस क्रिएट करना है तो उस लोकेशन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू 1. दिस इज 1. 3 and 2 के अंदर अगर कन्वर्ट करना है देन वी हैव टू मेक इट 3 and 2 पोजीशन 1. सो दिस इज, तो जब हम दोनों पोजीशन 2 and 3, 3 and 2 इन दोनों को जब 1 पे सेट कर देंगे दैट मीन्स 2 and 3 वर्टिसेस के अंदर एजेस बन गया. सो विल बी डूइंग दैट वन फॉर एडिंग एजेस. सो फॉर दैट विल बी क्रिएटिंग अ न्यू फंक्शन add age. So now let's create public void add age. And once we have declared the name, now we'll be passing 2 points. We'll be passing the source point integer src. Let's say this point, this is the source point जहाँ से हम start कर रहे हैं, this is the destination point. 2 पॉइंट हम source और destination के तौर पे पास करेंगे. So this is integer source and integer destination. So now हमने source और destination create कर दिया. अब हमें क्या करना पड़ेगा, that we have to, this is source 0 और 1. सो जो भी 0 और 1 के अंदर लोकेशन होगा वहाँ पर 1 सेट करना पड़ेगा. एंड 1 और 0 के अंदर जो लोकेशन होगा वहाँ उस पोजीशन को भी 1 सेट करना पड़ेगा. दैट इज सोर्स डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन सोर्स दोनों को 1 पे सेट करना पड़ेगा. सो सिंपली एडजेसेंसी मैट्रिक्स, adjoint of matrix source destination that is equals to 1. Again adjoint of matrix destination source that is equals to 1. ओके तो हमने डेस्टिनेशन और सोर्स दोनों के सेट कर दिए. नाउ एजेस को हमने रिमूव करने का मेथड ऐड तो कर दिए, लेकिन समटाइम्स हमें रिक्वायरमेंट पड़ सकता है कि हम एजेस को रिमूव भी करें. नॉट ओनली एड, हमें रिमूव भी कर पाए. इवन लीड कोड क्वेश्चंस में यू कैन फेस कि आपको एजेस रिमूव करने का क्वेश्चन आस्क किया. सो फॉर दैट व्हाट, उसके लिए भी हमें एक और फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा दैट इज रिमूव एज. और अगर सपोज किसी के अंदर एजेस नहीं है, लेट्स से 2 and 3 के अंदर एजेस नहीं है, सो उसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना होता है देन व्हाट वी वुड डू, सिंपली हम उस लोकेशन के 0 पे सेट कर देते हैं. 3 2 लोकेशन को 0 पे सेट कर देते हैं, मतलब दैट इज इक्वल टू दिस सेम ऑपरेशन. इसमें अगर हम वैल्यूज को 1 के एक्सचेंज में 0 पे सेट करते हैं दैट विल बी द रिमूव एज फंक्शन. सो लेट्स डू इट. हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, हम जस्ट सेम फंक्शन को कॉपी कर लेंगे. so that हमें कुछ नहीं, we are just copying the same function. Okay, so copy and paste, and this is the remove age function and that is same. हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, हम जस्ट सेम फंक्शन को रिमूव कर देंगे. so now let's notice what we are doing. ये जो age फंक्शन था we'll be just removing that one, age. so this is age. now we'll be removing, so we'll be calling it remove age. remove age. ओके द सेम फंक्शन नेम इज चेंज. हम सिमिलरली सोर्स और डेस्टिनेशन को पास कर रहे हैं एंड दिस टाइम 1 के एक्सचेंज पर हम 0 पे सेट कर देंगे. 0 0. सो व्हाट इज द फॉर्मूला, हम कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ नोटिस 2 and 3 के अंदर अगर हमें चेक करना हो सो वी कैन सिंपली 2 and 3. सो जब भी 2 and 3 के अंदर कोई एजेस होगा द वैल्यू इज 1 and the 3 and 2 both person will be 1 because that is the same point. अगर 2 और 3 के अंदर एज हो या फिर 3 और 2 के अंदर एजेस है, that is the same things. so that I am talking about that is the same things. so now we'll be checking अगर एजेस exist करते हैं.
सो जब भी एजेस एग्जिस्ट करेगा इन दोनों के बीच में पॉइंट कनेक्टेड पॉइंट जो भी होगा उसका वैल्यू 1 होगा। अगर एजेस एग्जिस्ट नहीं करेगा दैट मीन्स 0 1 एंड 2 के अंदर, सो इफ यू जस्ट नोटिस 1 and 2 this location will be 0, that location will be 0 0. So we'll be implementing that one. So let's start how we can implement the edges. So for that we'll be using the function each edge. So we'll be simply writing like this: public boolean, that means we'll be returning either true or false, is edge. So edges में हम दो पॉइंट को पास कर सकते हैं, हम एज सोर्स और डेस्टिनेशन पास कर सकते हैं या फिर एज इंटीजर ij पास कर सकते हैं. So let's call it integer ij, integer ij or source destination whatever. So integer source और destination. So अगर एजेस इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा तो उन दोनों के जो भी वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1. सो हम अगर चेक करें adjoint of matrix, adjoint of matrix source of destination, that is equals to 1. अगर हम ये वाला चेक रन कर दे सो व्हाट विल गेट, अगर उन दोनों के बीच, अगर दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच अगर एज एग्जिस्ट करेगा देन विल बी गेटिंग द वैल्यू 1, और अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा देन विल बी गेटिंग द वैल्यू 0. तो दैट मीन्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो हमें 1 ट्रू मिल जाएगा ऑटोमेटिकली. सो हम सिंपली इसे ही रिटर्न कर देंगे, द रिटर्न adjoint of matrix, and this is now returned public boolean ejs. Now we'll be checking the self loop sections that if they are having loops among themselves or not. So we'll be calling again, हम return करेंगे boolean. So public boolean self loops, self loops, and self loop में हम सिर्फ एक ही vertex पास कर सकते हैं, each self loop or hash self loop whatever. So this is self loops and हम एक पॉइंट पास कर सकते हैं, लेट्स कॉल इट वर्टेक्स और नोड व्हाटएवर. सो नाउ नोटिस जब भी किसी एक पॉइंट में सेल्फ लूप होगा मतलब 0 से 0 पे एक सेल्फ लूप होगा, 2 से 2 पे एक सेल्फ लूप होगा, 3 से 3 पे सेल्फ लूप होगा. सो दैट इज मतलब इनका जो वैल्यू है डायगोनल सेक्शन तब 1 हो जाएगा, 1 1 1. द डायगोनल सेक्शन विल गेट चेंज इनटू 1. मतलब अगर कभी भी हमारे डायगोनल सेक्शन मतलब 0 0 1 1 2 2 इन सारे पोजीशंस अगर 1 हो जाए तब हम बोल पाएंगे कि वहां पर एग्जिस्ट करता है. दैट मीन्स अगर हम सेम काम यहाँ पर भी करें, वी डू द सेम इन द नेक्स्ट सेशन, दैट adjoint matrix of 0 0 or 1 1 or 2 2 डॉट डॉट इक्वल्स टू 1. अगर ए 1 हो जाए, सो अगर ए 1 होते देन इट विल रिटर्न 1, ये रिटर्न कर देगा 1. और अगर ए 1 नहीं होता इट विल रिटर्न फॉल्स 0. सो यहाँ से ट्रू या फॉल्स दो वैल्यू हमें मिल जाएगा. दैट इज अगर ट्रू हुआ यू विल गेट ट्रू और अगर फॉल्स हुआ विल गेट फॉल्स. सो सिंपली इफ वी जस्ट रिटर्न दिस सेक्शन दिस थिंग्स, रिटर्न adjoint of matrix of vertex दैट इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 ही होना चाहिए. अगर 1 हुआ तो हमें ट्रू रिटर्न हो जाएगा और अगर 1 नहीं हुआ देन हमें फॉल्स रिटर्न हो जाएगा. सो दिस इज द हैश सेल्फ लूप फंक्शन. ओके, तो हमने चेक कर लिया कि कैसे हम एक लूप के अंदर अगर सेल्फ लूप है या नहीं वो चेक कर सकते, क्योंकि अगर सेल्फ लूप होगा तो 1 होगा और 1 के साथ अगर हम मैच कर लें सो हमें ट्रू मिलेगा या फिर वॉल्स हमें फॉल्स मिलेगा. सो दैट इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन, कोड रिप्रेजेंटेशन. ओके, सो हम नेक्स्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स की डिग्री की तरफ हम मूव करेंगे. सो फर्स्ट हमें जानना पड़ेगा दैट व्हाट इज कॉल्ड द डिग्री. डिग्री होता क्या है? सो डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स मतलब जो भी जितने भी, नाउ नोटिस द पॉइंट 0, तो हम क्या बोल सकते हैं डिग्री. सो 0 के साथ, इस 0 वर्टेक्स के साथ जितने भी नोड्स कनेक्टेड हैं, दिस 2 दिस 1, ये सारे जितने भी नोड्स कनेक्टेड हैं इन सबको इसकी डिग्री बोला जाता है. दैट मीन्स इफ यू कॉल द डिग्री ऑफ 0, degree of 0, so the degree of 0 will become 2. If we call the degree of 2, 2 के साथ भी you can see that is 2 3 and 0. suppose एक और पॉइंट हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर, this is 5. so now 2 का डिग्री बढ़ के क्या हो जाता, 3 हो जाता, because 3 points are added.
मतलब किसी भी एक नोड्स के साथ जितने पॉइंट्स कनेक्टेड है उसे डिग्री बोले जाते हैं. सो नाउ द डिग्री ऑफ टू, जो भी टू का डिग्री है दैट विल बिकम 3. वाई? क्योंकि हमने 5 ऐड कर दिया. सो सिंपली इफ वी जस्ट अप्लाई द प्रोग्राम जहाँ पे वी कैन कैलकुलेट दैट वन कि कितने नोड्स कनेक्टेड है एंड दैट विल बिकम द डिग्री. नाइबर ऑफ अ वर्टेक्स दोनों सेम टाइप की है. सो फर्स्ट हम डिग्री के लिए कनेक्टेड करेंगे. तो हम डिग्री के लिए कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? नोटिस, अगर हम जीरो को कंस्टेंट रखें, दैट इज वी आर कीपिंग द जीरो कंस्टेंट. यू कैन नोटिस जीरो इज हियर. और हम जीरो की रेस्पेक्ट में चेक करें जीरो ऑन पोजिशंस, 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 2 0 3. सो विल गेट द वन. तो जब भी हम 0 1 को चेक करेंगे 0 1 we will get it as 1. Why? Because there is an edges. 0 to 2 चेक करेंगे we'll be getting again 1. ओके, सो ओनली वन वन सिर्फ हमें यहाँ पर मिलेगा. अगर हम 0 से 3 पे चेक करेंगे विल बी गेटिंग 0, क्योंकि वहाँ पर कोई भी एजेस कोई भी कनेक्शंस नहीं है. मतलब उन सारे जीरोस की पोजीशन के लिए अगर हम चेक कर दे, मतलब इस नोट्स को फिक्स रख के अगर हम बाकी सारी पोजीशंस को चेक कर ले मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एजेस में, अगर उनकी वैल्यू 1 के साथ इक्वल होता है then we can call it that is a vertex. So let's write the program. एंड इसके लिए हम पहले डिग्री नाम के फंक्शन क्रिएट करेंगे. सो पब्लिक इंटीजर, क्योंकि इस फंक्शन में मेनली हमें डिग्री का काउंट रिटर्न करना पड़ेगा, डिग्री. एंड इसमें हम पास करेंगे इंटीजर वर्टेक्स, इंटीजर वर्टेक्स. ओके, वर्टेक्स हम पास करते हैं. अब हमें डिग्री को काउंट करना है, इसलिए हम स्टार्ट करेंगे इंटीजर डिग्री 0 से. सो इंटीजर डिग्री, सो दैट इज अ वर्टेक्स एंड इंटीजर डिग्री. क्योंकि जो हमें काउंट करना है हमने बाय डिफॉल्ट इसको पहले सेट कर दिया एज अ जीरो वेरिएबल. उसके बाद हम सिर्फ एक लूप रन करेंगे. सो दैट इज ये वाला जो भी लूप होगा वो सारे वर्टिसेस के लिए काम करेगा, सारे वर्टिसेस के लिए काम करेगा. सो फॉर इंटीजर I equals to 0, I less than number of vertices, I plus plus. एंड नाउ हम चेक करेंगे डिग्री प्लस इक्वल्स टू हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा डिग्री, जो एक पॉइंट फिक्स रखना पड़ेगा दैट इज वर्टेक्स. इस वर्टेक्स को फिक्स रख के बाकी सबको ऐड कर देंगे. सो जो भी एडिशन का रिजल्ट आएगा दैट विल बी द डिग्री. सो हमें एट द एंड रिटर्न कर देना है डिग्री. Okay, so now we have returned the degree. So if you just notice how our program will run, adjacency matrix of I, मतलब we'll be checking okay. So हम start करेंगे like this. Our I, this variable, ये जो variable I है, this will keep changing. और जो point fixed है, suppose हम search करेंगे point, हम सर्च करेंगे 3 के लिए, this point 3 के लिए. So it will start like this. This code will start like this. This will start like this and जो भी positions होगा, so first ये start कर गया 0 position से. So we'll be searching 0,3 positions. 0,3. So this is 0 position and third position. So we'll move to 0 and third position and we'll check. So 0 and third के अंदर कोई connection नहीं है. So this is 0. And then it will check for the position that is 0. 0, 1, third position. क्योंकि I का वैल्यू जो है 1 by 1 इंक्रीज होता रहेगा. This I will keep increasing. So 1,3. So this is 0,3. Now this is 1,3. 1,3 and we will get here what? We will again get here 1,3. 1,3 के अंदर vertex है. So we will get here as 1. Now it will search the 2,3 this position. So 2 और 3 के अंदर भी vertex है. So we will be getting 2 and 3. This one to be 1 because 2 and 3 के अंदर vertex है. Now it will be checking for the position 3 and 3. 3 and 3. 3 and 3. And if you notice 3 and 3, so 3 and 3 के अंदर कोई vertex नहीं है. अगर vertex होता तो वो एक self loop हो जाता. So it will be 0. So it will get 0. At then क्या करेगा, डिग्री में जो भी वैल्यू है सारे वैल्यू एडेड होता रहेगा. So like this, it will be getting added like this. 1 and 3 में क्या था? 1 and 3. So this was 1.
So ये सारे वैल्यू at the end add हो जाएगा like this 0 plus 1 plus 1 plus 0 and we get the vertex. The degree of vertex 3 is 2. So ऐसे हम vertex calculate कर सकते हैं किसी भी डिग्री का. So that is the calculation how we can calculate the vertex of any point. We get the vertex of 3 to be 2 from the program. Okay, so we have written the program. अब हम check करेंगे that how we can calculate the neighbor of any vertex. Okay, so let's move towards the calculation of neighbor of any vertex. प्रिंटिंग द एडजेसेंसी मैट्रिक्स. हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स को बाद में प्रिंट करेंगे. हम पहले चेक करेंगे दैट हाउ वी कैन गेट नाइबर्स. सो जब भी हमें नाइबर्स चाहिए, मतलब एक किसी भी ग्राफ में नाइबर्स कौन होते हैं, जो भी 2 के साथ आसपास कनेक्टेड है, दैट इज 0 3, ये सारे नोड्स इसके नाइबर्स हुए. मतलब हमें इन सारे नोड्स का जो भी वैल्यू होगा उससे एक लिस्ट की तौर पर रिटर्न करना पड़ेगा. 2 की अगर हम नाइबर्स बोले, नाइबर्स ऑफ 2, सो जो भी होगा उसका एक लिस्ट होगा, उसकी नाइबर्स में आएंगे 0 3, और इन्हें हमें लिस्ट की तौर पे रिटर्न करना पड़ेगा. दैट मीन्स हमें पहले तो एक नाइबर्स नाम की फंक्शन क्रिएट करना है और उसकी अंदर से इस लिस्ट को रिटर्न करना है. सो व्हाट इज दिस? एक लिस्ट है ऑफ टाइप इंटीजर, क्योंकि इसके अंदर इंटीजर स्टोर्ड है. तो सो हमें एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर हम इंटीजर को रिटर्न करेंगे. सो लेट्स क्रिएट द फंक्शन एंड विल बी कॉलिंग इट पब्लिक, एंड दिस टाइम नॉट बुलियन, क्योंकि हमें बुलियन नहीं लिस्ट रिटर्न करना है. लिस्ट ऑफ इंटीजर, एंड इस फंक्शन का हम नाम देंगे गेट नाइबर्स. गेट नाइबर्स, और इसके अंदर से हम पास करेंगे एक वर्टेक्स. कोई भी वर्टेक्स, हम सपोज 2 को पास करना चाहते हैं. सो दिस इज ऑल्सो वर्टेक्स. तो इसके अंदर से हमें वर्टेक्स को पास करना पड़ेगा एंड इसे हम मूव कर देते हैं. सो दैट इज ओके. सो नाउ लेट्स राइट द नेक्स्ट सेक्शन. हमने नाइबर्स को क्रिएट कर लिया. अब हमें क्या क्रिएट करना है? हमें जो लिस्ट, हमें ए वाला लिस्ट क्रिएट करना है. दैट आई सॉ यू. सो लेट्स क्रिएट दैट लिस्ट. लिस्ट ऑफ इंटीजर, एंड इस नेम को हम नाम देंगे नाइबर्स. सो लिस्ट ऑफ इंटीजर्स नाइबर्स. एंड जब भी हम किसी चीज़ को इनिशियलाइज करते हैं, हम ऑलवेज न्यू कीवर्ड को यूज करते हैं. सो दैट विल बी न्यू एरे लिस्ट. सो हम एरे लिस्ट की रेस्पेक्ट में हमने नाइबर्स को डिक्लेयर भी डिक्लेयर किया. दिस वॉज अप टू दिस सेक्शन, दिस वॉज डिक्लेरेशन. एंड उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन था दैट वॉज इनिशियलाइजेशन. सो हमने डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों कर लिए. नाउ विल बी चेकिंग द मैट्रिक्सेस. So we'll be applying the same formula. So for integer I equals to 0, I less than number of vertices. Number of vertices, हम बिना पास के नंबर ऑफ वर्टिसेस के क्यों यूज कर पाते हैं? क्योंकि ये जो नंबर ऑफ वर्टिसेस है दैट इज अ ग्लोबल वेरिएबल. एंड आई प्लस प्लस. ओके, सो 4 नंबर ऑफ वर्टिसेस है जो 0 से 3 तक रन करेगा. अब हम चेक करेंगे इफ. सो बिफोर वी चेक, ओके, हम चेक करेंगे इफ अगर. सो वी आर लेट्स से वी आर फाइंडिंग फॉर 2. 2 के लिए हम वर्टिसेस की काउंट चेक करते हैं. सो 2 दिस इज 2. So if we just count the 2 and 0 relationship, there is an edge, so it will be 1. 2 and 3, that will also be 1. 2 and 3. 2 and 3, that will also be 1. So let's keep it 2 and 3. It will also become 1. And 2 and 1, it will become 0. 2 and 1, it will become 0. 2 and 3, yes, 3 is connected. So 2 and 3, this will become 1. So कुछ ऐसे रिलेशन हो सिर्फ होगा अगर हम फाइंड करें तो. So हमें मतलब we have to find the pattern. And now there is again 2, this is 2. So हम count करेंगे for this line 2 and 3. There is not 2 and 3, 2 and 0. No. So हम 0 के लिए count करते हैं 0 and 2. Yes, this is 1. 0 and 2. Now we'll be counting like this 1 and 2. 1 and 2 के अंदर कोई vertices नहीं है. मतलब जो भी हमारा प्रोग्राम रन करेगा ना वो ऐसे रन करेगा. फर्स्ट it will take the value of 0, then it will take the value of 1, then it will take the value of 2, then it will take the value of 3. So हमें पहले 0 and 2 के लिए चेक करना है. 0 and 2, is there a vertex? Yes, there is a vertex. 0 and 2. 1 and 2, is there a vertex? 1 and 2, no, there is not, so it will be 0. Is there between 2 and 2 and 2? So 2 and 2, no, 2 and 2 is always self of 0, so that is also 0. 3 and 2, so this is 3 and 2, so this is 1. So if we got a complete row where 1 0 0 1, so हम चेक करेंगे that if
दैट अगर हमें 1 मिलता है दैट मीन्स वहाँ पर वर्टिस एग्जिस्ट करते हैं. दैट मीन्स इफ adjoint matrix of what? Adjoint matrix of I, comma vertex, एक को हम फिक्स रखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 1. अगर वो 1 की इक्वल होता है तो देन वी विल बी सिंपली हम एक के बाद एक सबको ऐड कर देंगे. सो विल बी एडिंग नाइबर्स डॉट ऐड NEIGH नाइबर्स डॉट ऐड ऑफ आई. सो जो एरे लिस्ट हमने क्रिएट किया तो उनमें ऐड कर दिए और उसके बाद एट द एंड हम उसको रिटर्न कर देंगे. रिटर्न नाइबर्स. सो लिस्ट ऑफ लिस्ट रिटर्न हो गई. सो दैट इज द मैट्रिक्स फॉर्म. नाउ इसके बाद हम प्रिंट करना है एडजेसेंसी मैट्रिक्स को. या सो प्रिंट करना है एडजेसेंसी मैट्रिक्स को. सो हाउ वी कैन प्रिंट द एडजेसेंसी मैट्रिक्स? दिस इज वेरी सिंपल. इफ यू जस्ट नोटिस द एडजेसेंसी मैट्रिक्स, सो हम जब भी रो को इटरेट करते हैं फॉर दैट हम यूज करते हैं आई. एंड आई के थ्रू हम रो को तो इटरेट कर जाते हैं लेकिन हमें इसमें क्या करना है? 2D को इटरेट करना है. मतलब वी हैव टू इटरेट दिस कॉलम ऑल्सो, दैट कॉलम ऑल्सो, दैट कॉलम ऑल्सो. सो इसके लिए हम आई के अंदर एक और इनर लूप यूज करेंगे जे, जो इस कॉलम को इनरली इटरेट करेगा. सो विल बी राइटिंग सिंपली फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, for integer I equals to 0, I less than. So इसके लिए भी हमें एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा. So let's call it public void print matrix. Okay, and now हम स्टार्ट करेंगे. For integer I equals to 0, I less than number of vertices I plus plus. सो इंक्रीज होता रहेगा आई प्लस प्लस. दिस इज फॉर इनर लूप, इस लूप को विजिट करने के लिए. नाउ वांट टू विजिट दिस लूप आल्सो. सो इसके लिए हम एक और इनर लूप यूज करेंगे फॉर. उससे पहले हम लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. सो सर सिंपली हम मैट्रिक्स को क्रिएट करेंगे, कुछ लिखेंगे नहीं. देन विल बी राइटिंग फॉर इंटीजर j इक्वल्स टू 0, j लेस देन नंबर ऑफ वर्टिसेस j प्लस प्लस. एंड देन हम क्या करेंगे? आई एन जे. हम सिंपली इस वैल्यू को प्रिंट करेंगे. सो प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट. नाउ हम प्रिंट कर देंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ आई एंड जे. आई एंड जे पोजिशन को हम प्रिंट कर देंगे. सिर्फ हम प्रिंट करेंगे, लाइन ऐड नहीं करेंगे वरना ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा एंड मैट्रिक्स विल लुक बैड. अब हम नेक्स्ट में लाइन को ऐड करेंगे. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. सो एक नया लाइन एडेड हो जाएगा एंड दिस इज इट विल कंप्लीट द प्रिंट मैट्रिक्स. सो हमने प्रिंट मैट्रिक्स तो कर लिए. अब इन सारे फंक्शंस को रन करना है. एक ड्राइवर कोड चाहिए जो हम मेन फंक्शन से करते हैं. सो उसके लिए हम क्रिएट करेंगे मेन फंक्शन. सो फॉर दैट विल बी राइटिंग public static void main, public static void main string args. सो सिंपल हमें पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि इस क्लास का नाम ग्राफ था. सो ग्राफ दैट इज इक्वल्स टू न्यू ग्राफ. तो हमने पहले एक ऑब्जेक्ट ग्राफ क्रिएट कर दिए और इस ग्राफ की रेस्पेक्ट में हम एक के बाद एक एजेस को ऐड करेंगे. सो ग्राफ डॉट ऐड एज. वेट, नाउ ऑन नोटिस हमने यहाँ पर नंबर ऑफ एजेस पास नहीं किए. सो विल गेट एन एरर इन दिस सेक्शन. नंबर ऑफ एजेस कितने हैं? 1 2 3 4. इस एजेस में 4 एजेस हैं. सो विल बी पासिंग 4. सो दिस इज 4. ओके, देन ग्राफ डॉट ऐड एज. सो अब हम एज ऐड करेंगे. लेट्स से वी आर पासिंग द वैल्यू 0 एंड 1. सो जैसे हम 0 एंड 1 पास करेंगे दिस वन विल हैपन. 0 एंड 1 के बीच प्रोग्राम में एक लाइन बन जाएगा. सो नाउ विल बी पासिंग ग्राफ dot add age, graph dot add age 1,3. सो हमने 1 और 3 पॉइंट को जैसे ही पास किया प्रोग्राम में क्या होगा? 1 और 3 के अंदर एक ग्राफ बन जाएगा. सो नाउ विल बी पासिंग ग्राफ
dot add age. एंड नाउ 3 and 2 पॉइंट को पास करेंगे. जैसे 3 and 2 पॉइंट को पास करेंगे क्या होगा, 3 and 2 के अंदर एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन एज बन जाएगा क्योंकि वी आर एडिंग द एजेस. सो उसके बाद फिर से ग्राफ डॉट एड एज. अब हम एज ऐड करेंगे 0 and 2 के अंदर. सो 0 and 2 एंड नाउ 0 and 2 के अंदर एक एज बन जाएगा. सो हमारे ग्राफ जो हम देख सकते हैं, इफ यू रन दिस प्रोग्राम, दिस सेक्शन ऑफ प्रोग्राम, हमारे ग्राफ कंप्लीटली कंस्ट्रक्टेड हो जाएगा. सो ओके, उसके बाद what we want to print the graph. So we'll be simply calling the print graph function. System dot out dot println. So printing the graph, एंड यहाँ से हम कॉल कर देंगे प्रिंट ग्राफ फंक्शन को, प्रिंट ग्राफ. सो प्रिंट ग्राफ फंक्शन को हम जैसे भी कॉल कर देंगे, एक फंक्शन कॉल कर जाएगा. नाउ नोटिस द प्रिंट ग्राफ, दैट इज प्रिंट ग्राफ. नाउ नोटिस वन थिंग कि यहाँ पे प्रिंट, दिस इज प्रिंट मैट्रिक्स. तो हमें प्रिंट मैट्रिक्स या प्रिंट ग्राफ वॉट एवर, सो वी कैन कॉल इट ग्राफ क्योंकि दिस इज नॉट अ मैट्रिक्स, इंस्टेड इट इज अ ग्राफ. सो दिस इज ग्राफ, प्रिंट ग्राफ, जिसे मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. सो दैट इज प्रिंट ग्राफ. तो हमने प्रिंट ग्राफ में वन थिंग दैट वाज पब्लिक स्टैटिक प्रिंट ग्राफ. सो अगर हम फंक्शन को अभी रन करें, वी विल गेट एन एरर. सो अगर क्यों, बिकॉज दैट इज नॉट स्टैटिक कीवर्ड, क्योंकि हमने स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं किया. सो विल बी यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, ग्राफ ऑब्जेक्ट. विल बी यूजिंग दिस ग्राफ ऑब्जेक्ट. सो ग्राफ dot print graph. Now we will get no error. So next, once we have initialized that, नाउ हम एक के बाद एक फंक्शन को, मतलब जो एजेस को रिमूव है, हम एजेस को रिमूव भी कर सकते हैं. सो इफ यू जस्ट कॉल द फंक्शन दिस वन, ग्राफ डॉट रिमूव ग्राफ, रिमूव एज. अगर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे 0,2, तो 0 and 2 के अंदर जो एज है, दिस एज इन द नेक्स्ट सेशन रिमूव हो जाएगा एंड द ग्राफ विल लुक लाइक दिस, 0 से 1, 1 से 3 एंड 3 से 2. कैन यू सी? अगर हम फिर से एक एड एज कॉल कर देंगे लाइक दिस, ग्राफ डॉट एड एज एंड लेट्स से 2,5. सो एक और नए ग्राफ क्रिएट हो जाता, बट वी वुड गेट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर क्योंकि यहाँ पर हम एक नया पॉइंट ऐड करते. सो इसके लिए हमें पहले से मेमोरी एलोकेट करना पड़ता. सो वी विल गेट एन एरर. सो इफ यू जस्ट रन 2,0, सो 0 and 2 के अंदर फिर से एक नया ऐड हो जाएगा. सो दिस इज हाउ द एंटायर प्रोसेस रन्स इन द ग्राफ. सो that's all about adjacency matrix, how we can implement the adjacency matrix. Previously we have observed the implementation of the graph adjacency list. Today we'll be implementing graph adjacency matrix. So let's move to the VS code. So we'll be working inside the directory writing. So let's create one more file, code, and let's call it graph adjacency matrix.java. And okay, let's start implementing the file. So for matrix, first हमें क्या करना पड़ेगा, we have to create the number of vertices. So let's start by creating the number of vertices and by declaring the adjacency matrix. So it will be private integer, and this is the 2D adjacency matrix. Okay, so after this we'll be declaring private integer number of vertices, and we have declared the number of vertices. अब हमें इसे create करना है, we have to create the graph. So we'll be declaring a constructor graph adjacency matrix, and adjacency matrix will be using integer number of vertices. So for that, this dot number of vertices. So vertices got established. Now we'll be initializing the adjacency matrix. So for that adjacency matrix, we will be using the same number of vertices, new integer number of vertices, Okay, so now we initialized. Still, now we have to import the package that we'll be utilizing. We'll be utilizing import the list java.util.list, import java.util.linked list. Okay, so we'll be creating the linked list file also. I mean not linked list, this is array list क्योंकि हम array list use करेंगे, array list. So okay, now we have created the graph adjacency matrix. Now we have to
add the edges. So adding edges, and for that we'll be creating a new function, add public void add edge, integer source comma integer destination. सो ओके, इसमें जस्ट सिर्फ हमें अपडेट कर देना है दोनों सोर्स एंड डेस्टिनेशन की मैट्रिक्स पोजीशन को. सो एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन ऐड करना है, मतलब उन्हें वन पे कन्वर्ट कर देना है. वन मतलब द एज हैज बीन एडेड, डेस्टिनेशन सोर्स. ओके, सो दिस इज वन. सो हमने अभी ऐड कर लिया. अब अगर हमें रिमूव करना है तो इसको सिंपली जीरो पे अपडेट कर देना है. सो पब्लिक वॉइड रिमूव एज. सो हम रिमूव करेंगे इंटीजर सोर्स. सो ओके, हम रिमूव कर रहे हैं. सो एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन दैट इज इक्वल्स टू जीरो. जीरो पे अपडेट कर दिया मतलब रिमूव्ड हो गया एज पर द प्रोग्राम सिस्टम. Destination of source and then it again got updated to 0. So this is adding and removing the edges. उसके बाद हम चेक करेंगे अगर एज एग्जिस्ट है या नहीं. एज एग्जिस्ट है मतलब वन वैल्यू होना चाहिए. पब्लिक बुलियन इज एज. सो ओके, चेक करेंगे दो वर्टिसेस के अंदर. सो लेट्स कॉल इट इंटीजर सोर्स इंटीजर destination or we can call it any node or node 2 whatever. So we'll be simply return adjacency matrix of source of destination that is equals to 1. अगर 1 इक्वल हुआ that means true रिटर्न होगा, if not then false रिटर्न होगा. उसके बाद we'll be checking the print matrix. So before print हम चेक करते हैं अगर डिग्री कितने हैं. So public integer degree. So degree is the total number of vertex connected to that one. So degree integer vertex. Okay. So in the integer vertex, we will be initializing the degree, integer degree as 0, degree equals to 0. And जितने भी number of vertices है इसके लिए हम add कर लेंगे. For integer I equals to 0, I less than number of vertices I plus plus. So 0, 1, 1, 0, एक लाइन का जो भी है सब added हो जाएगा and we'll get the degree plus equals to degree plus adjacency matrix of I. इस I पोजीशन पे जो भी होगा we will be adding that one. So that will be I और vertex और I, किसी को भी एक fixed रखना पड़ेगा. So let's say we are fixing the vertex and then we are running. So it can be vertex of I or I of vertex, anything, and after adding we will get the total number of degree. So we'll be return degree. So हम अब डिग्री को रिटर्न करें. उसके बाद हम चेक करेंगे अगर सेल्फ लूप है या नहीं. सेल्फ लूप है मतलब जो भी डायगोनल पोजीशन होगा वो 1 होना चाहिए. सो पब्लिक बुलियन सेल्फ लूप. सो हैज सेल्फ लूप. So integer vertex. So we'll be simply returning return self loop. That means return adjacency matrix of vertex equals to 1. So vertex 1 1, that means this is diagonal position. अगर a equals to 1 हुआ that means 1 के पास खुद की लूप है. So that is has self loop. उसके बाद we can have function like get neighbors जहाँ पे सारे neighbors को रिटर्न करना पड़ेगा. So for that we'll be returning as list of integer and this is get neighbors. So this is get neighbors. किसी भी एक वर्टेक्स का neighbors हमें रिटर्न करने में बोला जा सकता है. So this is integer vertex. So first हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर स्टोर करेंगे इंटीजर and let's call it neighbor nei change viewer. So this is neighbors and now we'll be initializing with new array list and now we'll be running for जो भी कनेक्टेड है. फॉर इंटीजर I equals to 0, I less than number of vertices I plus plus. सारे एलिमेंट्स के लिए हम चेक करेंगे अगर उसका वैल्यू एडजेसेंसी मैट्रिक्स में 1 हुआ है नहीं. इफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स कौन के लिए, उन सारे को जो कनेक्टेड है वर्टेक्स के साथ, वर्टेक्स दैट इज इक्वल्स टू 1. अगर 1 के साथ कनेक्टेड है तो सिंपली हम उनको अपनी एरे में ऐड कर देंगे. neighbors डॉट ऐड ऑफ I. सो उस I इंडेक्स को हम ऐड कर देंगे. ओके, सो मेथड टू गेट ऑल द नाइबर्स. सो हम उसको ऐड कर देंगे 0 1 2 3 4 जो भी होगा. अब उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे नाइबर्स को, रिटर्न नाइबर्स. सो आफ्टर वी हैव रिटर्न ऑल द नाइबर्स हम प्रिंट करेंगे मैट्रिक्स को. सो पब्लिक
void print graph. So this is print graph, and simply हम दो लूप यूज करेंगे इंटीजर फॉर इंटीजर I equals to 0, for integer I equals to 0, I less than number of vertices I plus plus, and it will be like this: for integer I equals to j equals to 0, j less than, this is for inner loop, number of vertices j plus plus, and हम प्रिंट करेंगे system dot out dot print करेंगे हम all the number of vertices adjacency matrix of I comma j, and then I space, and printing the row system dot out dot print row plus I. So this is, and उसके बाद हम एक लाइन खत्म हो जाएगी, we'll be adding a line system dot out dot print ln. So we are adding a line after this. So okay, it will work. उसके बाद when this program is going to exit, so हम एक main method run कर देंगे. So let's add a main method. So public static void main string out. So string out में हम ऐड कर देंगे solution solve1, that is equals to new solution. Sorry, we have to create an object with respect to graph. Actually lead code, I'm obsessed of lead code, so आ गया graph adjacency matrix graph, that is new graph adjacency matrix. Okay, and we'll be passing the number of matrix to be, let's say we'll be passing 5 or 4. So we are creating a graph for 4, so let's say 4, and then now we'll be adding the edges. So graph dot add edge 0 to 1. So let's say we are passing for 0 and 1. Graph dot add edge 1 comma 2. Graph dot add edge, so that will be 2 comma 3. Now again we'll be adding graph dot add edge 3 comma 4. Graph dot add edge 4 comma 5. Sorry, we are only adding 4 vertices. So this is adding edges. Now we'll be printing the matrix. So system dot out dot print ln the adjacency matrix, so graph dot print graph. Okay, this is the graph, we are printing the graph. Now we can also print the diagrams, I mean degrees, system dot out dot print ln the degree of 2. So from here we'll be calling the graph dot degree of 2. So it will keep printing. So now by now we have created the entire matrix. Now let's run the file. So we'll be compiling the file java compile -t dot graph adjacency matrix dot java, and let's close this YT file and let's see what happens. So now the file has been created in the main YT file. Okay, and now we'll be running the file java graph adjacency matrix. What is adjacency matrix? What it tells, that index 4 out of bounds for length 4. So we are getting an error that index 4 out of bounds for length 4. Why? Java graph adjacency matrix 4 out of bound for length 4. And this problem aroused at line number 14. Let's see the line number 14. Source of destination. So we are passing somehow 4 0 1 1 2. Oh sorry, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, and then we had to pass 3 to 0, and that's why we are getting the error. Now we have 4 vertices, and this is a circle type. So let's again compile. Why I'm getting this error?
So let's again compiling the file, Java compile, and now Java graph adjacency matrix. Okay. Now we can see the entire got printed. The row got printed. What is the row? 0, 1, 2, 3. And you can see that is 0. We haven't provided here space. Sure, it's looking bad. So again compiling. Now see, this is showing me red. This is the red because we are not using the package. Java should always use the package. So now if we compile the program, Java compile and then Java run. But now the compiled file is in the package. This is the package and the compiled file is inside this package here. So we have to provide here the directory was Vertices, and now see, this is the matrix and that is the row 0, 1, 2, 3. That is the matrix. So okay, for now it's okay. Now we'll be meeting in the next video session. Till then, stay connected by subscribing.